Why don't you introduce yourself in the camera? Okay, my name is Sayyam and I belong to Himachal, Dharamshala, but I've been in Delhi for the last about uh, 24 years, 25 years. Move around a little because of work. That's it. So, what do you do, Sayyam? I am into IT, Mm-hmm. networks, computer networks. And how do we know each other? Um, वो दुख भरी कहानी आई थिंक 24 साल पुरानी है अच्छा, ओके जब मैं आपसे एक इंस्टीट्यूट में मिला था ओके। तो वहीं से ये शुरुआत हुई थी तो हम एक दूसरे को 24 साल से जानते हैं, but या that is a age for somebody to really grow up, complete his education, and even probably get married, right? एब्सोल्युटली So, एब्सोल्युटली how have been the journey so far with me, Sayyam? गुड So clearly shows सही that है it's a नहीं नहीं mix. इट्स बीन गुड इट्स बीन वेरी गुड It's been इट्स very बीन good. वेरी गुड या इट्स बीन अमेजिंग it's been amazing and I think god willing we'll have some amazing years together again Okay. yeah So quick introduction summary is that he's the oldest friend that I have from and in Delhi. stop using the word And oldest oldest by oldest I meant the longest yeah for the longest longest period I have known anybody in Delhi. हाँ सबसे Uh, ज्यादा जो इसको झेल पाया है सबसे ज़्यादा जो मुझे झेल पाया probably yes maybe हम्म, or me and Sayyam we started as roommates. We lived together for 4 years, and then he decided to make the biggest mistake of his life, which is getting married. हम्म, So he decided to get married, and then obviously we changed paths. But we have been in touch for a very long time. So Sayyam, what are you doing here? I mean, this looks like a different place altogether, right? So what are we yeah doing here? so we I think we decided to take a sabbatical from work and थोड़ा डिसाइड किया एक्सप्लोर करते हैं जर्नी करते हैं एंड जो पार्ट्स हमने नहीं देखे हैं वो देख के आते हैं अच्छा, सो बोल के बेसिकली ये वो प्लान है जो मैं पिछले 15 सालों से संयम के साथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट संयम हर साल, हर महीने, हर हफ्ते किसी ना किसी रीज़न से मुझे डिच करता रहा है। ऑब्वियसली वर्क, ही सेड वर्क इज प्रायोरिटी एंड थिंग्स लाइक दैट. So this time I said, boss, either you come along or you better delete my number. So द so थ्रेट वर्क the threat worked, and I was telling somebody today that मैं 15 साल के बाद कन्विंस कर पाया हूँ उसको कि वो मेरे साथ एक लंबे ट्रिप पे जाए, और जिससे मैं बात कर रहा था उसने मुझे बोला कि रीज़न आप नहीं हो साथ में जाने का, बट ये पीछे जो गाड़ी दिख रही है ये है. सो मे बी दी महिंद्रा थार इज द रीजन दैट ही सेड लेट्स गो. जब मैं उधर So yeah, so he just noted, right? So he just reconfirmed. So we decided to take a long या time वेकेशन off टुगेदर vacation together, and right now where are we, Sayam? So where did we start and where are we right now and where are we headed? सो वी स्टार्टेड फ्रॉम गुड़गांव Okay. and so we are on our second pit stop Mm-hmm. we stopped at Jammu Mm-hmm. and then we are in Srinagar right now right Okay. beside the Dal Lake. Yeah. It's So a nice comfy hotel, not too fancy but very comfortable, very nice and good for the night. and it's just 2 minutes walk from the Dal Lake. The Yeah, hotel is called Hotel Madhuban. Not a bad place actually. I yeah, mean, it's very good. I would nice. give it a good review. Yeah, So yeah, if you come to Srinagar and want to stay put somewhere near the Dal Lake, so maybe this is one of the options. So Sayam, where are we headed from here and when do we head out? so we will head out tomorrow to Leh Okay. and we will try to make it to Kargil, No, no, Kargil and the Leh, other way around. the other way around actually. Yeah. Sorry. So tomorrow our plan is to go to Kargil first, Hmm. and then if time permits, we'll head out to Leh. Achha, then we head out to Leh. Yes. Okay. All right. So and what is the plan thereafter? Um, we are actually playing it by the year, Okay. right? Mm-hmm. We don't have any plan. Okay. So I think that is the beauty of the this trip, that nothing is planned except for the route, I guess, right? Except for Except for the the route. route, yes. Yes. So we So were debating. Sorry, yes, after you. yes. Nani, please go ahead. So we were debating this morning because when we were coming into Jammu yesterday, we were discussing अगर हमें दूसरा रूट लेना चाहिए, which is हम गुड़गांव से मनाली जाएं, मनाली से ले and ले से वैसे ही वापस.
सो देन वी डिसाइडेड कि नहीं एक काम करते हैं, एक पूरा राउंड मारते हैं, विच मीन्स कि हम गुड़गांव से जम्मू आए, जम्मू से श्रीनगर, से कारगिल, से लेह लद्दाख नुब्रा, पैंगोंग, से मनाली, से चंडीगढ़ टू फाइनली गुड़गांव. So that is how we thought, we will plan this trip, and that is what we are trying to execute. हमें आज मॉर्निंग में जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, एक बड़ा ही शानदार ढाबा था जिसका नाम था शर्मा ढाबा. बहुत ही प्यारे लोग थे, बहुत प्यार से उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट कराया. और बट जाते जाते हमें थोड़ा डरा दिया. उन्होंने बोला कि जब संयम ने पूछा कि क्या बात है शर्मा जी, यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, वरना बाइकर्स और गैंग दिखता है, महिंद्रा का गैंग दिखता है. तो ही सेड कि ये दिस इज़ नॉट अ ग्रेट टाइम फॉर टूरिस्ट टू कम. तो हमने पूछा भाई क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि इस वक्त काफ़ी रेनफॉल होता है और लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आप जाओ. तो आई गॉट लिटिल कंसर्न, और मैंने संयम को बोला, संयम आर यू श्योर हमें जाना चाहिए, या हमें श्रीनगर के बाद वी शुड टेक अ डिफरेंट राउट एंड गो समवेयर एल्स. संयम सेड, वेल हाँ, व्हाट डिड यू से संयम? वेल एक्चुअली मैं व्हाट जिमी इज टेलिंग, जो ये जिमी कह रहे हैं वो बात यहाँ एक दो लोगों ने और रिकन्फर्म करी है दैट दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम बिकॉज पिलग्रिम्स हैं, अमरनाथ यात्री हैं बहुत सारे, करेक्ट. एंड उसकी वजह से एक्चुअली देखा जाए तो हमें तीन चार जगह हॉल्ट करना पड़ा है. काफ़ी ज़्यादा रश मिला हाँ, इनफैक्ट. बड़ा रश मिला है, सो हाँ, हमें तीन चार जगह हॉल्ट करना पड़ा है बिकॉज आर्मी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी एंड राइटली सो आई बिलीव. तो बट फॉर द टूरिस्ट या इट्स अ हैसल एंड अब आगे देखते हैं बिकॉज वी डोंट रियली नो, राइट. सो या जैसा होगा वो अपडेट करेंगे. सो हम देखेंगे कल हमारे साथ नेचर कैसे प्ले करती है, लैंडस्लाइड्स, रेनफॉल, हम्म, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, और हम टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि सारी चीज़ें होती हैं, देखते हैं हमारे साथ क्या होता है. आई होप वी मेक इट सेफ टू ले. Once we are in Leh, hopefully things should be okay. So Sayam, I also I am also planning to do a series called Cushion Talks with JT, which is me, Jimmy Thomas. Short form is JT. And the reason why I am trying to do so is because हम बहुत सारे shows देखते हैं, बाकी जो elite club run करते हैं, जैसे I don't want to name them, but उसमें काफ़ी फेमस लोगों को बुलाया जाता है और हंसी मजाक होता है, उनसे समझा जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है और उनके दोस्त कौन हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो उसमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ एक एक एलीट ग्रुप ही है जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए. करेक्ट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सब एवरेज लोगों में बहुत ही अनकॉमन लोग हैं, बहुत इंस्पायरिंग लोग हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है. करेक्ट, तो मुझे लगा हमें मेरे आपके जैसे जो कॉमनर्स हैं उनको इस प्रोग्राम में लेकर आना चाहिए, और उनसे बात करनी चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग हुआ है, उन्होंने क्या किया, आज वो कहाँ पर हैं, तो क्यों हैं, और अगर नहीं भी हैं तो भी इट इज़ ओके. आई मेड दैट फनी स्टेटमेंट देयर कि अगर आप यहाँ से चले वहाँ पहुँचे, और अगर नहीं भी पहुँचे तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी ना किसी से कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा. या राइट. सो संयम, जितना आई नो यू ऑल्सो हैड वेरी हम्बल बिगनिंग्स, राइट? सो what do you think played for you, right? Because I know when you and I came to Delhi, a joke है by the way, मैं और संयम in 1996, we were in our 20s, right? Maybe not even 20s, maybe we were just We getting were into 20s, right? have, I think around 17, 18 is the age. Yeah, Correct yeah. age. So 17, 18 is Hmm. maybe not 17, 18, but yeah, somewhere around that number, 19, 20, or maybe 18, 19. Hmm. तो हम जोक करते थे, उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल नए थे और हम स्टूडेंट्स थे. तो मैंने संयम और मैं बात कर रहे थे ड्रीम्स की, और मैं संयम को पूछा था, संयम व्हाट इज़ योर वाइल्डेस्ट ड्रीम, व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश इन योर लाइफ. एंड ही सेड ऑफ ऑल द थिंग्स ही सेड, एंड वी वर डिस्कसिंग वी सेड एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब मेरे पास एक मारुति 800 होगी, संयम तुम्हारे पास एक मारुति 800 होगी, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, संयम तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, और हम एक दूसरे से मोबाइल फ़ोन पे बात करेंगे. सो दैट वाज द एस्पिरेशन दैट वी हैड इन 97 98, राइट? सो वी हैव कम अ फार वे फ्रॉम देयर, संयम. Hmm. इट It's इट a long लुक्स route. एंड Yeah, साउंड्स लाइक अ जोक, राइट? correct. बिकॉज कभी सोचा नहीं था कि जो भी थोड़ा बहुत हम कर पाएँ लाइफ में, अचीव कर पाएँ ना, कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पहुँचेंगे. So what do you think played for you? Would you say, so what do you think played for you wherever you are right now? Okay, so Jimmy, I think A, you use the word an average, a common man. I believe everybody is special, Everybody is special. Yeah, right? that is the Everybody is reason I'm special. doing this show called Yeah. Question Talks with JD. So um,
एवरीबडी हैज़ हैड अ डिफरेंट जर्नी, हमारी जर्नीज बड़ी डिफरेंट रही हैं। हम्म। एंड यू आर राइट, हम लोग दोनों बड़े हम्बल बिगनिंग्स से आए हैं। एंड जहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ग्रेट नहीं है कि आप फॉल बैक है आपके पास, एंड वो मुझे लगता है कि दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, हम्म। व्हेन यू नो यू डोंट हैव अ support system, Because then you a strive and work financial hard. support system. Families are great, Hmm. right? Yeah. Families are absolutely Awesome. amazing, Yeah. awesome, कि वैसा families I don't think हो सकती हैं किसी की। But अगर हम बात करें financial, that we know that we can go back to something that was not there, Okay. right? So that made us very persistent in our goals. We knew जब आपके पास ऑप्शन नहीं है वापस जाने का, आपको पता है कि वापस जाने के मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप स्ट्राइव करते हैं आगे। फेलियर आपके लिए मायने ऑप्शन नहीं नहीं है। रखता। ठीक है, फेलियर आपके लिए एक सिर्फ बम्प बन जाता है कि ठीक है, रोड ब्लॉक आया है बट मुझे इसके पार जाना है। सो देर इज़ नो टर्निंग बैक बिकॉज पीछे कुछ नहीं है। सो आई आई थिंक शायद ये वजह रही है, बिकॉज वी हैड आर शेयर ऑफ फेलियर्स, यू ऑल्सो एंड मी ऑल्सो, राइट? वी बोथ हैड आर शेयर ऑफ फेलियर्स। हम दोनों ने बहुत चीज़ें ट्राई करी जो नहीं चली, राइट? सो आई थिंक वही वाली कहानी है कि 10 चीज़ें नहीं चली पर दो तो चल गए, राइट? राइट, हाँ, राइट, बट वी नेवर गेव अप। राइट। सो बेसिकली बिकॉज बोथ ऑफ अस कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, राइट? हम दोनों बहुत छोटी जगह से आते हैं, जिनको टियर 2 टियर 3 सिटीज़ भी बोल सकते हैं। या बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड जो भी हम थोड़ा अपने आप कर पाए, वी हैव मेड सम प्लेस फॉर आवरसेल्व्स। तो संयम, फॉर द टाउन टियर 2 टियर 3 सिटी बॉयज़ और गर्ल्स, जो कभी, जैसे मैं जिस शहर में रहता था, मैं कभी उस पॉइंट पे, व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई हैड नेवर गॉन इन अ बिगर सिटी, राइट? द फर्स्ट बिग सिटी दैट आई टच्ड post my class 12th was Jaipur, and when I went to Jaipur, Jaipur was a big city for me. एंड मुझे याद है, मैं और मेरे दो दोस्त, बहुत ही क्लोज प्यारे दोस्त, uh, हम लोग इतना खुश हुए कि हम वहाँ पर एक सर्कल है, उसके ही चक्कर लगाते हैं रात को 11 बजे बाइक पे तीनों बैठ के। तो इतनी खुशी हुई। सो what do you have to tell people, who come from small towns? Do you think they can make it big in large cities? एब्सोल्युटली, व्हाई Mm-hmm. नॉट? इट इज़ जस्ट दैट यू, आई मीन ये चीज़ बड़ी ज़्यादा रिपीट की गई है, सबने करी है, Mm-hmm. बट आई थिंक इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, Mm-hmm. राइट? यू डोंट हैव टू गिव अप। You don't have to give up. या, Okay. नेवर गिव अप, नेवर स्टॉप बिलीविंग। एंड आज मैं ये भी बताना चाहूँगा दैट ये चीज़ें खैर अब वीव चेंज कार्स, वीव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम हैविंग जस्ट टू व्हीलर्स and not having money, you know that, right? Yeah. So we've not had Start. anything, Yes. right? Right. So वहाँ से we've come a long way, Mm-hmm. जहाँ ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती हैं। Mm-hmm. बट अगर आज फिर भी देखो तो बेस्ट ईयर्स कौन से थे जब कुछ नहीं था? So Those were let's the best so years. let's come on. So we have had very serious discussions, Yes, right? So yeah, क्वेश्चन टॉक्स का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम बहुत क्रैम्प्ड स्पेसेस में अपनी लाइफ में होते हैं। yeah, मतलब व्हेन yeah, आई से yeah, क्रैम्प्ड yeah, स्पेसेस, आई मीन हम बहुत सीरियस होते हैं बिकॉज yeah, ऑफ अ वर्क yeah. और बिकॉज ऑफ अ रूटीन, Correct, फैमिलीज एंड correct, थिंग्स लाइक दैट। correct. सो my idea is to get people outside of that zone. Yeah. So what are your good memories? What are the times that you've enjoyed? What are the funniest things or parts of your life? Okay, And what do you so want to do which are interesting for you in future? here I will talk about the best times that I've shared with you, Yeah, okay. right? And interestingly, they have not been in a car; they have been on a bike, They have been on a bike, yes. on cold Yep, months, that's if you on remember. on cold nights, yes. Yeah, cold nights we used to travel together, हाँ, राइट? एंड हम लोग इसको अपने काम से जाना होता थे, मेरे से 10 रुपए शेयर करवाता था पेट्रोल के लिए कि हाँ। तू भी डालेगा। बिकॉज़ फन तेरे को भी आता था ना, बिकॉज़ यू वर माय पिलियन राइडर, राइट? सो मैं सिर्फ मैं सो अकेला नहीं जाता था, हम दोनों हाँ, मस्ती करने तो जाते थे। वो दैट वाज और नाउ बाय द इफ यू वे लुक कॉलेज में बैक, सब लोग ये करते हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं की मैंने। सो इफ यू लुक बैक एक्चुअली दोस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज, राइट? And why would you say that? Because maybe you didn't have that kind of money at that time. You didn't have, you know, you don't have had access to the materialistic thing at that point of time, compared to today, right? Maybe it is 10x or 20x what या, it used to be earlier. करेक्ट। So why? What was the reason for you to remember those days more than you do it today? आई थिंक मेरा अपना मानना ये है कि जो बेस्ट बॉन्ड्स, बेस्ट फ्रेंडशिप्स बिल्ड होती हैं, Mm-hmm. वो तब बिल्ड होती हैं व्हेन यू आर अ नोबडी एंड व्हेन यू हैव नथिंग। Okay, because that's when you get to test people, right?
Uh, Yeah, because that is the time you come to mm, know mm, who are the people who will value you, mhm, even when financially, mhm, you are a nobody. mhm. And जॉब की अगर बात करें या कैसे भी, तो you are a nobody in those, in that Right, perspective you are a nobody. right. But then you will still find people who will value you, who will Mhm, love you, mm. For right? who you are. For who you are, Yes, right? Simply. yes. And then for the rest of your life, ये चीज़ फिर उन लोगों के साथ मैटर करती ही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी मैटर नहीं कर रही थी. And because you have seen those people Yes, at a time which were very tight for you, so absolutely. you would always value You, them, yeah, always remember the yeah, association that you had with. And by the way, we had very funny friends along. yeah, I won't name them because they won't like it, but yeah, we had a very interesting group of friends, you know, all very distinct characters. yeah. um, हम एक साथ यू नो रेंट पे एक जगह रहते थे, Mm. और हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था, सो वी ऑल यूज्ड टू लिव इन डिफरेंट रूम्स। एंड एक हमारा दोस्त था जो हमेशा रेंट देने के टाइम पे लेट हो जाता था। तो जो हमारी And लैंडलॉर्ड थी, by the way, he's लैंड a big shot today. by the way, he's a very big shot today. Yeah, He makes a lot of money, yeah, but there was a point in time when he was also in college and he was struggling with money. He also came from a tier two city. और जो हमारी लैंडलेडी की फैमिली थी, they were amazing people, you know, they were like family। और आज भी मैं अभी बॉम्बे गया था, कुछ एक महीने पहले मैं उनसे मिलने गया था, एंड यू नो शी वाज सो हैप्पी, यू नो शी यूज्ड टू, yeah. She's like an elder sister to शी इज लाइक us. अ एल्डर सिस्टर टू अस। और जो इवेंचुअल लैंडलेडी थी वो उनकी मदर इन लॉ थी, और वो बहुत ही मज़ेदार थी, वो इतनी फनी कैरेक्टर थी एट द एज ऑफ 80-85 ऑल्सो। Mm. तो मुझे याद है जब वो रेंट कलेक्शन के लिए आती थी, तो जो हमारे दोस्त होता था, जो आज की डेट में बहुत बड़ा बिग शॉट है, Mm. वो बाथरूम में छुप जाता था और निकलता ही नहीं था। तो Uh, वो बुलाती रहती थी उसको, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, और वो आवाज़ भी नहीं निकालता था। mm. और आधे घंटे बाद जब वो परेशान हो जाती थी, हम उनको दादी बोलते थे बड़ा प्यार से, तो जब आधे घंटे बाद परेशान होती थी, तो उसके बाद वो बाथरूम से निकलता था। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज वी हैव फ्रॉम आवर Yeah, पास्ट, yeah, yeah. राइट सेम? Mm. सो या, सो व्हाट अदर थिंग्स डू यू रिमेंबर फ्रॉम दोस डेज? Yeah, so I believe, um, I think हर स्टेप में, हर जर्नी के स्टेप में एक लर्निंग है, हम्म, राइट? एंड जब आपके पास कुछ नहीं है, हम्म, तब आपके पास ड्रीम्स हैं, हम्म, एस्पिरेशंस हैं, और आपके पास ऐसी फ्रेंडशिप्स बिल्ड करने का टाइम है हम्म, जो लाइफ लॉन्ग चलेंगी। हम्म, तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि आपके पास कुछ नहीं है। हम्म। सो इफ़ यू लुक बैक, आज हम बात करते हैं, राइट, कि दोज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेज, हम्म। right? Those were the best days We of our still have life. interesting Yeah, days, right? I We are having a yes, very good time together. absolutely. But Yeah. that was real nice. That was a real nice time. टेंशन फ्री, राइट? देयर वाज नो टेंशन, Absolutely, कोई टेंशन नहीं थी राइट? किसी चीज़ की. Yes. सिर्फ एक बाइक चाहिए थी, और हाँ, पेट्रोल दोस्त चाहिए था दोस्त उसमें, चाहिए थे, एक दो और दोस्त थोड़ा सा थे. पेट्रोल चाहिए था जहाँ डेस्टिनेशन पहुंचना है। हाँ, बस उसके इससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, राइट? कुछ नहीं था कहीं भी खा हमारे. सकते थे। अब हम बहुत कॉशियस हो जाते हैं कि पानी हाँ, कैसा है, पानी का. हाइजीनिक है कि नहीं है, हाँ, कहीं बट भी तब खा हम लेते. तब हम 10 सोचते ही नहीं थे, 12 राइट? रुपए में दो लोग खाना खा हाँ, लेते मतलब थे. कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी, कुछ हाँ, भी खा लेते थे, करेक्ट. राइट? सो या, सो I'm going to ask you a very important question, because I think this is something that you can touch upon, which is inspiration. So, what inspires you, or do you want to talk about people who have inspired you? You know, who are not, who are again commoners like us. So this could be family, this could be friends. Uh, Cite some examples. ओके. सो इंस्पिरेशन में अगर मैं बात करूँ, तो हाँ, पीपल अराउंड मी, हम्म, you are an inspiration. You never gave up, okay, right? You never gave up. mm-hmm, And my brother mm-hmm. Siddharth Siddharth, is a very big inspiration. mm, So he's very intelligent. yes, he is. So sometimes he becomes a pain also. इतना intelligent है that it becomes painful. बाय द वे सिद्धार्थ, तेरे साथ आधा घंटा बात करना ना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज आपको हमेशा इंटेलिजेंट बातें करनी होती हैं, राइट? हाँ, संयम के साथ but वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, but he is a very big inspiration. He हाँ, never gives up on you, या, right? So like I said, जो family का support system है, हाँ, amazing. तो he will never give up. and sorry to cut you, but Yeah, he's currently working on a startup, and I'm not going to reveal what he's doing, but yeah, I'm sure he will do very good and he'll come out very strong, very yeah, big, because I love the concept on which he's working. So Siddharth, best of yeah. luck. Sorry, So coming back to you, So Sayam. he never gives up on people. He believes in people. He Mm. never gives up on people. So बड़ा amazing. तो मैं family की बात कर रहा था. Mhm. Parents very loving, Yeah, supporting, no doubts. right? So आपको जो चाहिए ज़िंदगी में, मुझे लगता है some people who believe in you, right? That is all you need. Because there will be times जब you will feel like giving up. Because आप ultimately एक you are part of society,
एंड जब आप आसपास देखते हैं तो ये मटेरियलिज्म इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, आप कहीं ना कहीं आपको ज़रूर लगेगा कि अरे वो उसके पास ही है, मेरे पास नहीं है, आप उसका कंपेयर कितना करते है, हो, राइट? कंपैरिजन में आप। मटीरियलिस्टिकली कंपेयर हाँ, करते हो। मतलब आप ना करना भी चाहो तो कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड आपके चलता है, राइट? तो पहली बात, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट पर हम तो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस हम हैं तो करते हो हैं, राइट? जाता है, राइट? बचपन में भी करते हैं, राइट? कि हाँ, उसके पास क्या खिलौना है, मेरे पास क्या खिलौना है। करेक्ट। बड़े हो गए हम हाँ, करते हैं, विच तो इज़ ओके। या सो ऐसे में आपको, यू जस्ट नीड पीपल हु बिलीव इन यू हुँ, एंड हु लव यू अनकंडीशनली। हुँ। दे कैन बी योर फ्रेंड्स, दे कैन बी योर फैमिली, एंड दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं, आप इस एज ग्रुप में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में हैं, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज ऑलवेज लव देम, बिलीव इन देम, एंड हमारी जर्नी जैसे रही है, अगर हम अपनी बात करें, तो कभी शायद सोचा नहीं था कि कोई इस लेवल तक आ पाएगा, राइट? या, हाँ, यस। तो आई थिंक दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? Okay, so you can derive inspiration from anybody, right? Anybody आसपास, Right? right? So It does always. not have to be just the PM or the president. Mhm. Yeah, so anybody. People are, look at people around you, And you can right? always pick good things out of them, right? Absolutely, look at people around you, आपको लोग दिखेंगे कितनी डिफिकल्ट जर्नीज कर रहे हैं, कितना कितना डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल रहे हैं, एवरीवेयर, राइट? सो या। So to cite a quick example, last week I went to Igatpuri, which is near Mumbai, about 3 hours drive, and I went for a Mahindra 454 Adventure Academy. तो मेरे जो कैब ड्राइवर थे, अब्दुल नाम है उनका। आई थिंक ही इज़ अर्ली 20s, राइट? एंड ही वाज टॉकिंग, आई वाज एंड ही साउंडेड अ वेरी सीरियस गाय। तो मैं उसको बोला था कि यार अब्दुल, बहुत सीरियस हो आप, इज़ एवरीथिंग ओके विद यू? So our journey of 3 hours actually got converted into 6 hours thanks to the rains which were happening between Igatpuri and Mumbai. The traffic was pathetic. Anyway, so he was telling me about his life and his story, and I thought, shit, man, हम अपनी lives के लिए बोल दें कि हमारी life कितनी difficult है. So I was telling Sayyam, when I heard his story, Sayyam, I was amazed that the kind of background he comes from. और कितना स्ट्रगल किया है उसने और कहाँ है वो आज। टुडे ही ओन्स अ कार, ही इज ड्राइविंग हिज ओन कार, इन मुंबई। ही इज लिविंग ऑफ हिज ओन, हिज मदर इज इन नॉर्थ ईस्ट, राइट? एंड मैंने उसको पूछा कि व्हेन डू यू वांट टू स्टॉप, व्हाई डोंट यू कॉल योर मदर टू मुंबई? मुझे बड़ा अमेजिंग रिप्लाई मिला। तो उसने मुझे, पता है संयम क्या बोला? उसने मुझे बोला कि सर मैं अपनी मदर को तब लेकर आऊँगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ कुछ बन जाऊँगा? तो ही सेड, सर जिस दिन मैं अपनी खुद की रेंज रोवर ड्राइव कर रहा हूँ, that's when I will bring my mother to Mumbai. And I was amazed for a 21-year-old boy to say this was very inspiring, right? Not having anything but a strong determination, and whatever inspiration he picks from anywhere. His sheer will to strive and do better in his life for him to give a good life to his family, his mother, and for himself was amazing, right? So I agree with you. So आप Yeah. inspiration कहीं से भी ले सकते हैं. You want to say something, Sayam? Well, there is just one last thing that I would like to add, Hmm. is that along the way, as you make your journey, जब भी कोई रोड ब्लॉक आता है, तो what I have seen is that any roadblock or any situation Hmm. that will, you have two choices to make Yeah. there, when you hit a roadblock, and that is, um, you can either become Give up. negative, give up, Negative. Hmm. right? Or you can be more determined, you can choose to have more compassion, you can choose to be more forgiving. So ये choice है आपके पास, and difficult choice is being compassionate and forgiving and being determined. That's the difficult choice. तो आप जब भी रोड ब्लॉक हिट करते हैं, चूज दिस ऑप्शन। एंड ऑफ द डे आपके पास पैसे चाहे जितने भी हैं, राइट, जेब में कितने भी पैसे हैं आपके पास, इट डज नॉट मैटर। Hmm. आप एक अच्छे इंसान बन पाए या नहीं बन पाए, वो ज़्यादा मैटर करता है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, राइट? दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, राइट? हम्म. सो वो चीज़, और ये जर्नी में ही होगा, इसी जर्नी में होगा जो आप लाइफ की जर्नी लेंगे, ये सेम चीज़। सो बी इट एनिमल्स, बी इट पीपल, you should have compassion. For Don't, everyone, for right? so everyone, right? so compassion Humility, is the key. The compassion. second important uh, important thing that I think
very important that we should all try to carry is humility, right? Yeah. uh, no matter what you become, you should never forget your past. If you've had a very humble beginning, you should always be very humble yourself, right, as you rise up the ladder. Because remember कि जो जिस बंदे से आप बात कर रहे हो सकता है आज उसकी खुद की हम्बल बिगनिंग्स हो, राइट? बट अगर आप उसको बहुत नीचे धकेलोगे तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा. तो ऑल द वे अलोंग यू हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू पीपल फॉर देम टू ऑल्सो कम अप इन लाइफ, राइट Correct. Sayam? Correct. Very very important, right? Yeah, So you yeah. have to treat everyone. And even people who are, if you want to label them as important, Yeah. even for them, हम लोगों को कौन लोग अच्छे लगते हैं? People who are humble, no matter where they are, no और matter what ऐसे position they are in. और ऐसे लोगों को ही लोग याद करते हैं. Yes, टाइटल्स absolutely. टाइटल्स को कोई कभी याद नहीं करता. आप हो Yeah, गए किसी कंपनी के बहुत बड़े correct, डायरेक्टर, correct, correct. बट आपको क्वेश्चन ये है अगर आप किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के एमडी भी हो, बट अगर आप Yeah, लिफ्ट में एक शॉपिंग मॉल के लिफ्ट में खड़े हो तो कम ऑन यार, आपको कौन जाता है? यू आर yeah, नो बडी, राइट? yeah. बट अगर आप एक एक कॉमनर हो, सिंपल, मतलब कोई बहुत फाइनेंशियली बहुत बड़े आदमी नहीं हो, बट अगर आप इन्फ्लुएंशियल आप किसी भी तरीके से हो सकते हो. आप सोसाइटी में Correct. सोशल कुछ काम कर रहे हो. आई यू नो ऑन लिंक्डइन आई एम फॉलोइंग अ गाय हु इज कॉल्ड पॉन्ड मैन. Yeah, नाउ व्हाट इट डज सयम इज बेसिकली वो छोटे छोटे गाँव में जाता है yeah. और जहाँ बैरन लैंड्स होती हैं वहाँ पर बेसिकली डिग करता है जगह को, और उस जगह को रेडी करता है फॉर इट टू बिकम अ पॉन्ड, यू नो, फॉर रेन्स टू कम, Which is such a nice thing. get get there, so that Correct. the people there in the village can Absolutely. utilize that river water, or maybe sorry, the pond water later on. So right, so he Yeah, might not be very big in, you know, very big financially, but people yeah. will know him. So it is important for, So yeah. So my yeah. what you asked me is, we spoke about the goal, right? Mm-hmm. But when we have to reach a goal, we Yeah. pick up habits on the way. So my Habits on it. focus was on habits. So make sure uh, goal one day will not be that important, right? Because आप eventually move कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, right? So and financial goal की बात कर रहे हैं या किसी भी goal की बात कर रहे हैं, habits जो हैं वो form होंगी, they will define you as a person. Mm-hmm. So make sure that you pick up the right habits, Mm-hmm. right? Okay. And it is important that you remember to pray. It is important that you remember to tell your loved ones that you That love you love them. them. Yeah. Yeah. And uh, not only your loved ones, but Mm-hmm. be kind. Be kind. Be kind. Mm. Be kind to everyone. Be Mm. compassionate. Be kind. अपना ये नहीं है कि अपना बेवकूफ़ बनवाना है. आप स्मार्ट रहिए. आप स्ट्रीट स्मार्ट रहिए. बिकॉज लाइफ में राइज करने के लिए स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है. And you don't want बट यस, बट somebody to यू कैन leverage बी you also, right? एब्सोल्युटली. सो अच्छी हैबिट्स पिकअप करिए, अच्छी चीज़ें सीखिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो रिलेशंस आपके साथ रहे हैं या जो रिलेशनशिप्स आपके साथ फॉर लाइफ खड़े रहे हैं, राइट, उनको वैल्यू कीजिए. उनको हमेशा वैल्यू करिए. तो सेम काफ़ी सीरियस हो गया. हाँ. थोड़ा सा गुड बाइट्स फॉर द करेक्ट, ऑडियंस, करेक्ट, करेक्ट. समथिंग या fun, funny, या which you are. You know, he's one character, and I envy him for this. You know, basically मैं लोगों से पूछ रहा हूँ आजकल, you know, in such sessions कि आपको कौन इंस्पायर करता है, आप किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं? तो संयम मुझे बहुत इंस्पायर करता है फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि मैंने देखा है कि किसी सिचुएशन में जब इंसान बहुत फंस जाता है, वो दुखी हो जाता है, बॉक डाउन हो जाता है. आई सीन संयम, ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ बड़ी प्लेन होती है. संयम हैड हिज ओन सेट ऑफ डिफिकल्टीज, राइट? बट आई हैव सीन संयम ऑलवेज वेरी हैप्पी. संयम अभी लग नहीं रहा है क्योंकि संयम आज 8 घंटे गाड़ी क्योंकि चला के आया उसका है. रीज़न है, एक तो मैं भूखा हूँ. बाय द वे इसने मुझे संयम हर दो खाने नहीं घंटे दिया. बाद खाता है, तो मुझे पता नहीं है भूखा क्यों है, बट हाँ, इसने 8 घंटे खाने नहीं दिया कुछ मुझे, तो सो ये 4 घंटे की इरिटेशन, चार चार बार की इरिटेशन है वो. संयम संयम 8 घंटे गाड़ी चला गया है. कल ये गाड़ी चलाते चलाते सो गया था, तो मुझे इसको हिलाना पड़ा. मैं बोला बॉस सॉरी, यू कम हियर, आई विल ड्राइव. आई वाज ऑलरेडी हाँ. वार्नड अबाउट इट, बट आई एक्सपीरियंस्ड इट यस्टरडे. और कल रात को मैंने इसको सोने दिया. ये कल रात को ही स्लेप्ट एट 9:30 yesterday night, got up at, I had to wake him up at 5 o'clock because we had to leave from Jammu and come to Srinagar. ये आराम से आया है और आके फिर सो गया कुछ 1.5 घंटा, और हर 2 घंटे बाद बोलता है मुझे भूख लगी है. तो लुक एट हिम, इसको देख के लगता है कि इसको हर 2 घंटे में भूख लगती हाँ, होगी. बिल्कुल लगती है मुझे, क्या बात so कर. so the so I was telling you कि this is amazing, right? So obviously we'll go out and have something good tonight also, but but you know, honestly speaking, personally, I am very happy that, you know, finally after whatever donkey years, you know, maybe 20 years, I'm with Sam now. And I wanted to do this Leh Ladakh trip for a very very long time. So
dream come true. I hope nature supports us, God supports us, and we are able to Most trail through. importantly, the administration supports us. Most That is very important, important. most importantly, the yeah, Yeah, the army stations, because I yeah, hope they don't turn us away कि आगे रास्ता बंद है correct. या कोई और प्रॉब्लम है। और Uh, जैसे हमने ओपनिंग में बोला था कि अमरनाथ यात्री काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे हैं, तो हमें हर जगह रुकना पड़ता है। hmm. और यार एक चीज़ बड़ी कमाल है यू नो JNK की, यहाँ लोग बहुत हॉन्ग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हॉन्ग करते हैं। हाँ, मतलब क्यों समझ नहीं आता है ना? हमें भी नहीं समझ आया, मतलब हम्म, खाली रोड पे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि एक्सेलरेशन के साथ हॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। लोग अच्छे हैं, नाइस बहुत हैं, अच्छे हमें हैं, बड़ा नो अच्छा डाउट्स। मज़ा आया। यहाँ इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है हाँ। लोगों के साथ। बट रोड पे मतलब दिस इज समथिंग दैट सी बिकॉज़ बिकॉज़ हम जब भी रास्ते में कहीं रुके, हमने किसी से रास्ता पूछा, पीपल वर सो नाइस, हाँ, वेरी बहुत अच्छे नाइस, लोग हैं। वेरी नाइस। हमने जहाँ खाना खाया, हमें इतने प्यार से खिलाया गया एवरी हाँ, टाइम। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथ यही बात कर रहे थे कि रोड पे क्या डिफरेंस आता है जी? आई थिंक वो जो एक्सेलरेशन और जो हॉकिंग है ना, हाँ, दे और दे जबकि सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है इतना नहीं है एक्सेप्ट एक्सेप्ट दी फॉर द रोड ब्लॉक्स, फॉर वहाँ द उसके अलावा रोड ब्लॉक्स, ट्रैफिक नहीं है, राइट? रोड ब्लॉक्स या। एंड आई मस्ट से द प्लेस वेयर वी आर हेयर नाउ, हमें लग रहा है कि टेरेन कितना डिफिकल्ट है, अरे बारिश हो रही है और ये सारी चीज़ें हो रही है, राइट। बट अ बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, मतलब क्या गजब काम कर रहे हैं यार। दे या आर सो फार अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, राइट। एंड वी सो मेनी आर्मी guys, we didn't intentionally take any footage because we want to respect them for their privacy and national security, right? But एक जगह पे खड़े हैं, मतलब सुबह खड़े हैं तो रात तक बारिश खड़े हैं, में इतना डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, and always बारिश हो so रही है। so attentive, या right? And they are protecting us, so hats off to the या Indian Army. एब्सोल्युटली। अमेजिंग, जो बोलते हैं ना सैक्रिफाइस, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस, कि आप अपनी फैमिली से दूर हो, आप इतने डिफिकल्ट कंडीशन में हो, या राइट। या आपने कब खाना खाया, आपने पानी कब पिया, और आप वापस कब जाओगे, आप मे बी कुछ ओवर नहीं वर्क पता कर रहे हो, राइट, आपको। कुछ भी हाँ, नहीं पता। हाँ, और उसके बाद भी वो डटे हुए हैं सिर्फ करेक्ट। इसलिए कि हम लोग सिक्योर रह सकें। या और इट्स अमेजिंग टू सी देम। it's amazing to see. So with all respect to them, we are going to head out to द लेक, Kargil tomorrow. no, right now we have to head out to right eat now something. right now It's we dinner we time. will move out to Dal Lake, Yeah, find something good to eat, so that Sayyam is happy, satisfied. The yeah, reason he gave this interview is only because I promised him that I'm going to take him out for dinner. yeah. So Sayyam, I'm going to take you out for dinner, and tomorrow we head to Kargil Leh, and then we do a journey. So I'll come back soon uh, with another friend, or maybe another commoner who might not be a friend or colleague, but one of you. So if you think your life is interesting, or you know somebody who's interesting, please leave your name or their name and their phone number in the comment section below, and I would love to talk to them to figure out what they do, and I will bring them on the forum. See you guys. Bye bye.